Good morning, team. Today we have the budget. Yesterday, economic survey came, so it is pointing to more reforms and more capex spending. So this is something positive. Even IT is a focus area for them. PLI scheme will be expanded, is what we can understand from that. But economic survey and budget cannot be on the same page. So it is aspiration, and the budget is reality. But no, I don't think any major tinkering will be done. But one thing we need to understand, whatever finance minister talks, these are headline numbers. The real thing will be in the document. So please do not react for each and every news which is flashed on the TV. No, it never makes any sense, and we will be a loser in that. Yesterday, Adani Group IPO, FPO has sailed through. In that, one key takeaway for us was now Ambani and Bharati Mittal have put in money there. That means there should be some deal where I think telecom stocks will start to move, because Adani was supposed to come in telecom. He had some 5G spectrum, but because these people have helped, I think that competition is now getting away. So this is very positive for Bharti Airtel and Reliance Jio. Bharti Airtel, if you see the numbers also, November, Jio lost client, whereas Bharti Airtel was still able to build clients. So at current level, Bharti Airtel is looking very attractive for 10 to 15% return in the next 6 to 8 months. So this is one of our topics. And yesterday, many stocks started to rally. In spite of market being negative or positive, market breadth was positive. That is something we need to watch out for. So we like Bharat Forge, BDL, HAL. Now we like few defense-related stock. So and even PSU stocks like Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank, they were bouncing back. So these are few stocks to watch out for, but not for short term. These are for bit longer term. And in Bharti Airtel has raised entry level tariff in all circles. So they were doing experimental 2 circles, then 7 circles they went. Now all 22 circles will have 155 as a base rate. So that means they are getting back the pricing power. This is very positive for telecom stock. Biocon likely to sell 10% stake in Syngene today through a block deal. 4 crore stock is on the deal. So price range would be 560, and the size will be 240 crores. Almost 10% they are selling. This is positive for Syngene because Biocon is getting out of the company. IOC results came. Revenue was higher by 17%, but profit after tax was down by 86% at 890 crores. So I think government needs to give something, otherwise it will be very difficult. Power Grid also came with the results. Revenue was higher by 7.7% at 11,261 crores. Profit after tax higher by 6% at 3,496 crores. EPS is 5 rupee 23 paisa. 9 months EPS is almost 16 rupees. So I think there is some upside, but I don't see a major upside. The growth is now tampering down in Power Grid. Previously, Power Grid was growing at 12 to 15%. Now the growth has come to 7%. So we are not too positive there. But whenever the stock corrects, there is a trading bet there. GST collection was higher by 24% at 1,56,000 lakh. So it is the second highest tax collection, positive for our country. UPL revenue was higher by 21% at 13,679 crores. EBITDA margin 21%. Profit after tax higher by 16% at 1,087. EPS for that current quarter is 13.52. Sun Pharma also came with the results. 14% is the revenue, which is higher, 11,241 crores. EBITDA margin 27%, and profit after tax higher by 5%
at 2,166 crores. Dividend of 7 rupee 50 paisa is announced. So slightly positive. Moil came with the results, disappointing results. Revenue down by 17% at 302 crores. And profit after tax 40 crores, which is down by 68%. But Moil has said that they have revised prices. So the revised price, they anything manganese ore content which is below 44%, they have increased by 6%. Manganese ore consent above 44%, it is 6% higher. Manganese ore content below 44%, and chemical grade, now they have increased by 5%. So this is something. Even we like Coforge, we like Zensar technology, persistent system. IT will not get impacted by the budget. So this is one sector to watch out for. Hester came with the results. Hester revenue was higher by 31% at 707 crores. Profit after tax is almost flat. I don't know what is the reason. We need to look into it. TTK Prestige came with the results. Revenue was almost flat at 695 crores. Profit after tax was down compared to 91 crores. It is only 58 crores. So TTK Prestige, Voltas, Whirlpool, globally and in India also, we are seeing things are not working out for consumer durables. So we are not positive, including Havels, we are not positive. We would like to wait till there is a pickup in this segment. Blue Star came with results. Blue Star results were slightly better. The revenue was higher by 19% at 1,788 crores. Profit after tax was higher by 23% at 58 crore. Order book was higher by 47% at 4,861 crores. Indian hotel result was fantastic. So that will have a rub-off effect on other hotel companies. So we like Mahindra Holiday, Lemon Tree and Chalet hotels. So this is something to watch out for. Shriram Finance came with the results. Their revenue was higher by 88%. Net interest income, it is 4,511 crores. Profit after tax, 1,801 crore. It is 2.6 times higher, but it is a merged entity. So we cannot assume this number as being apple to apple comparison. EPS is at 48. Now their AUM is up by 48% at 1,84,000 crores. Star Health came with the results. Star Health income was higher by 13% at 2,982 crores. Profit after tax at 210 crores versus 578 crores. Here we need to understand we are coming out of a COVID wave which was there in 2020, 21, 22. So we are coming out of it, and that is where from a loss making it has turned up profit making. But going forward, I think they will do better. So Star Health, the only problem is IRDA wants to allow every insurance to sell every product or everything. So that is where Star Health corrected. So at current level, it is looking attractive, but we need to wait and watch. GE Shipping came with the results. GE Shipping revenue was higher by 51% at 1,421 crores. Profit after tax was higher by 3 times at 647 crores. EPS for this quarter is 43 and 9 months EPS is 130 almost. They have announced a dividend of 7 rupees 20 paisa. Coal India also came with the results. Fantastic results from Coal India. So 25% revenue was higher. Profit after tax was higher by 69%. They have declared second interim dividend at 5 rupee 25 paisa. Very good results from Coal India. I think Coal India will outperform the market. This is one interesting news. IT department conducts survey action against Cipla. So what is survey action? That means they will not raid the promoter's house. It is only the offices and the documents related to the company, Cipla company is only raided.
So this is bit negative for Cipla. So with that, over to you, team. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग एक को रिव्यू कर लेते हैं। आज बजट का दिन है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, तो आज और कल हम लोग को ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें बोला गया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आईटी सेक्टर पे फोकस रहेगा, बट बजट ये रियलिटी होगी और इकोनॉमिक सर्वे डिफरेंट रहता है। तो हम लोग को लगता है कि ज्यादा कोई मेजर टिंकरिंग नहीं होगी बजट में। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बजट में जब टीवी पे अनाउंस होता है तो वो हेडलाइन रहती है, तो इतना रियल नहीं रहता है। जो रियल थिंग्स रहती है तो डॉक्यूमेंट्स रहती है, तो कोई भी न्यूज आने पे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। वी नीड टू वेट एंड फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर दैट ही हम लोग उस पे व्यू करेंगे। देन अदानी ग्रुप का जो एफपीओ था उसमें एक इम्पोर्टेंट की टेक अवे है कि अंबानी एंड भारती एयरटेल के जो मित्तल है उन्होंने मनी पुट किए हैं। तो एक ये टेलीकॉम स्टॉक के लिए मूव रहेगा, क्योंकि पहले अदानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करने वाले ऐसी न्यूज मतलब बात थी, बट अभी ये न्यूज नहीं है, तो ये पॉजिटिव रहेगा भारती एयरटेल और जियो के लिए। इसके अलावा भारती एयरटेल का हम लोग देखे डेटा, तो नवंबर मंथ में जियो ने क्लाइंट्स जो है वो लॉस किए, बट भारती एयरटेल के जो क्लाइंट्स है तो वो सस्टेनेबल रहे हैं। तो भारती एयरटेल ये लुक जो स्टॉक है हम लोग को अट्रैक्टिव लगता है, 10 to 15% का रिटर्न दे सकता है 6 to 8 मंथ्स में, तो ये स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो। कल मार्केट में इतनी नेगेटिव था तो भी बहुत सारे स्टॉक्स में रैली देखने मिली थी। तो मार्केट ब्रेथ जो अभी हम लोग को पॉजिटिव लग रहा है, तो उसमें बीडीएल है, एचएएल है, भारत फोर्ज है, ये डिफेंस रिलेटेड स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो। इसके अलावा पीएसयू सेगमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये स्टॉक को आप भी वॉच आउट कर सकते हो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से। भारती एयरटेल जो स्टॉक है उन्होंने एंट्री लेवल टैरिफ है वो इंक्रीज कर दिया है, और मतलब पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1 सर्कल में 2 सर्कल में किया था, बट अभी वो सारे सर्कल्स में होगा। ओवरऑल 22 सर्कल्स है उसमें, और उसका जो बेस रेट रहेगा वो 155 रहेगा। देन नेक्स्ट अपडेट है कि बायोकॉन है, उनका जो स्टेक है सिंजिन में 10% वो सेल करने वाली है ब्लॉक डील से। जो उसकी रेंज है वो 516 है और साइज है कुछ अराउंड 40 करोड़ की, तो ये पॉजिटिव रहेगा बायोकॉन के लिए। नेक्स्ट अपडेट है पावर ग्रिड के नंबर्स आए थे, रेवेन्यू 7.7% से इंक्रीज होके 11,261 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पैट भी ऊपर आया था 3,496 करोड़। ईपीएस जो था ये क्वार्टर का वो 5.23 था, और 9 मंथ का ईपीएस कुछ अराउंड 16 रुपीज के है। नेक्स्ट अपडेट है जीएसटी डेटा के ऊपर। जीएसटी कलेक्शन है वो 24% से हायर आया है, कुछ अराउंड 1,56,000 लाख के अराउंड कुछ आया, तो ये सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है, तो ये कंट्री के लिए अच्छा है। देन यूपीएल के नंबर्स आए थे, यूपीएल के नंबर्स में EBITDA मार्जिन 21% से हायर है, पैट 16% से इंक्रीज होके 1,087 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया। एपीएस जो है वो 13.52 रुपीज है। सनफार्मा के नंबर्स आए थे, रेवेन्यू 14% से इंक्रीज होकर 11,241 करोड़ रिपोर्ट किया है। EBITDA मार्जिन 27% से हायर है। पैट में 5% की ग्रोथ देखी गई है, और कंपनी ने कुछ अराउंड 20,166 करोड़ का रिपोर्ट किया है। सनफार्मा ने 7.5 रुपीज का 7.5 पैसा डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव है। देन मॉल के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी इतने अच्छे नहीं थे। पैट जो है वो डाउन आया 68% से, बट इनके ऊपर एक अपडेट है कि कंपनी ने प्राइजेस है वो रिवाइज की है। देन बजट में जो आईटी सेक्टर है उसको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, तो उसमें कोफोज, सेंसरटेक, परसिस्टेंस जैसे स्टॉक्स है, आप वो स्टॉक को वॉच आउट कर सकते हो। देन टीटीके प्रेस्टीज के भी नंबर्स आए थे, रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया 695 करोड़, पैट डाउन आया है। प्रीवियस क्वार्टर का पैट जो था वो 91 करोड़ था, ये क्वार्टर में 58 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्टॉक्स है वो इतना अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम लोग को वेट करना चाहिए जब तक उसमें पिकअप आता है। उसमें हैवल्स, वोल्टास वगैरह जैसे स्टॉक्स है। ब्लू स्टार के नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे आए। रेवेन्यू 10,788 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, पैट जो है 58 करोड़ रिपोर्ट किया है। ऑर्डर बुक 47% से इंक्रीज होके 4,861 करोड़ कंपनी का है। इंडियन होटल्स के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छे आए थे, तो रब इफेक्ट बाकी स्टॉक पे भी आप देख सकते हो। तो उसमें होटल सेगमेंट में MHRL, महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट, शाले होटल एंड लेमन ट्री स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो।
देन नेक्स्ट अपडेट है स्टार हेल्थ के नंबर्स आए थे, उनका जो इनकम है वो 13% से इंक्रीज होकर 2982 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पैट जो है वो 210 करोड़ है। और अभी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग कोविड के वेव के बाहर आ चुके हैं। तो पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, अभी प्रॉफिट मेकिंग है। आगे जाके कंपनी अच्छा कर सकती है, ऐसे हम लोग को लग रहा है। ये वैल्यूएशन जो है उसमें अट्रैक्टिव लग रहा है, बट स्टिल तो भी हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। देन नेक्स्ट अपडेट है जी शिपिंग के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 51% से इंक्रीज होकर 10,421 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पैट 3 टाइम से हायर आया है। ईपीएस जो है ये क्वार्टर का 43 रुपीज है और 9 मंथ्स का ईपीएस कुछ अराउंड 130 रुपीज के है। कंपनी ने 7.20 पैसा का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कोल इंडिया के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छा है, बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट आया है। 25% का इंक्रीज देखी गई है रेवेन्यू में। पैट में 69% की इंक्रीज देखी गई है। कंपनी ने सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया 5 रुपीज 25 पैसे का। देन आईटी डिपार्टमेंट सर्वे है, उन्होंने एक्शन ली हुई है सिप्ला के अगेंस्ट, तो ये एक स्लाइटली नेगेटिव रहेगा सिप्ला के लिए। इंडियन होटल्स के नंबर्स आए थे, नंबर्स जो थे बेस्ट क्वार्टर था ऑल पैरामीटर्स पे। कंपनी का नेट सेल्स इंक्रीज हुआ है 51.7% ईयर ऑन ईयर 16.8 बिलियन। इबिटा भी 5.9 बिलियन आया है। हेल्दी ग्रोथ है 85.6% की ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट है 3.8 बिलियन। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 371 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। नेक्स्ट अपडेट एसीसी के नंबर्स आए थे। एसीसी के जो नंबर्स है वो इबिटा हमारे इनलाइन ही रिपोर्ट किया है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 12% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। कैश और कैश इक्विवेलेंट दिसंबर 2020 में अभी 28 बिलियन है। देन नेक्स्ट अपडेट है जीएसपीएल जिंदाल स्टील एंड पावर। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 23 प्रॉफिटेबिलिटी है वो फोरकास्ट से बिलो आई है। सेल्स वॉल्यूम फॉल हुआ है 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। इबिटा फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 का 10% था, वो ब्रॉडली मेंटेन है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भी। करंटली जो टारगेट प्राइस है वो 541 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। और नेक्स्ट अपडेट है फिलिप्स कार्बन के ऊपर। कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो बिलो आए हमारे एस्टिमेट से। इबिटा बिलो आया है। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 26% ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 10% का फॉल देखा गया है 14 बिलियन का। नेट प्रॉफिट फॉल हुआ 9.8% ईयर ऑन ईयर और 41% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 बिलियन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट है मास्टेक के ऊपर। कंपनी ने अनाउंस किया वो की प्रमिला कलीवे को एज ए सीईओ अपॉइंट करने वाले हैं। उनको 3 डिकेट्स का एक्सपीरियंस है। इसके पहले वो जेंसाटेक में सीईओ का देखभाल करती थी, तो ये मास्टेक के लिए अच्छा रहेगा। द नेक्स्ट अपडेट है आईटी सेक्टर के ऊपर। जो इकोनॉमी सर्वे हुआ था उसमें आईटी बीपीएम सेक्टर ग्रो हुआ है 15.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और अगेंस्ट 2.1 जो ईयर बैक था। तो ग्रो मतलब लार्ज स्केल अडॉप्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर, और इसके अलावा जो इफिशिएंसी ड्राइव है वो रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट। तो ओवरऑल इसमें हम लोग आईटी सेगमेंट में इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस को बेनिफिशियल रहेगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was slight recovery in the market, but compared to Nifty, Bank Nifty has recovered at more than Nifty. Nifty has closed at 17,662 levels. Looking at the technical charts, we believe that there will be some amount of bounce in the Nifty. Nifty technically can go up to 17,800, 17,900 as a bounce for the next 1 or 2 trading session. On the lower side, we maintain that the 200-day moving average, which is at 17,290, rounding off to 17,300, will be the support levels for the index. Coming to Bank Nifty was up by 267 points, closing at 40,655 levels. Basically, the stocks like HDFC Bank, IndusInd, and Axis Bank were the counters which traded negative, whereas the POC banks were the sectors which saw some bounce in yesterday's session. So looking at the chart pattern, we believe there is some bounce expected in the Bank Nifty also. So that bounce can be seen close to 41,000, 41,500 level. And since today being a budget event day, we are strictly advising to not to do any trading activity. And maybe anybody who's looking for a positional bet from the 2-3 months point of view can look to add positions. What we believe during the last couple of days, the Bank Nifty banking stocks have corrected a lot.
So somebody's having want to take a positional view can go long in the banking stocks, selected defense stock and selected chemical sectors. So these are the sectors which can be bought for the long-term perspective. So that should be added during the next one or two trading session. We again strictly maintain there should be no trading call on next one or two trading session. Coming to derivatives data. Yesterday, we saw a long bill term in Nifty futures to the tune of 1.52%, which was the addition of 0.17 million shares. Put call ratios improved from 0.77 to 0.8, slight improvement. We will consider this as a little bit positive. The major additions were seen in the 17,400 and 17,600 put options. So this is a support. On the higher side, 17,900 and 18,300 call options. So that will be a resistance. Coming to Bank Nifty has also seen a long build up in yesterday's session. And the put call ratio is also seen some gains from 0.54 to 0.67. So a little bit positive. And the major additions were seen in 40,000 and 40,500 put options. So that is a support. Higher side 40,900 and 41,100 call options. So that is the resistance from the derivatives point of view. Coming to the FI data, so we are observing that FI again in yesterday's session, FI has sold in index future close to 17,993 contracts, and they are net short by minus 93,630 contracts. So this long short ratios again slightly come down from 18.35, it has come to 17.59. So historically, we have seen this long short ratio has come in the range of 15 to 13 on the lower side. So that can be seen if further selling is there. And the overall net position on the index future has gone close to 1 lakh, 1,10,000 contracts. So little bit more room space is there on the downside. So there is a probability if further selling comes, the long short ratio might come close to 50 lakh. So good part of this observation is if this is seen, then that can be the, so they are already short in the market. So there will be no further space for the shorting opportunity. So any good news or any strong positive in the market should see some bounce in the market. So net technically we can see a bounce back trend, and few long build-ups which were seen, which I feel we should keep a watch is M&M Finance, Polycab, and Dalmia Bharat. This is from expiry to expiry. So who wants to take a derivatives view can keep a watch on this counter. So that's all from my end. I hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hi, good morning all. So starting with a few results. First, Indian Hotels. So Indian Hotels reported best ever quarterly performance. The result was very strong on all parameters. Sales growth of 52% YOY to 1,700 crores. EBITDA growth of 86% and net profit was also very, up at least 4-5 times to 380 crores compared to only 600 million in Q3 FY22. So we have introduced FY25 estimates in our report, and now we value the stock at 20 times CV EBITDA FY25 and upgrade the stock to a buy rating. Second, ACC. So ACC reported results which were in line with our and street forecasts. So no major surprises. Volumes were higher by 12% on a QOQ basis. Again, in line with our expectation. And importantly, cost inflation increased YOY due to higher fuel and power costs, but now it is seeing trending declining trend. So that might bode well for the coming quarters. Then on Jindal Steel and Power. So Jindal Steel and Power profitability was below our expectations. Volumes were slightly lower than what we thought. It was down 5% on a QOQ basis to 1.9 million tons. And also its Mozambique operations EBITDA shrunk sharply because of low fall in coking coal prices. And overall, we expect the steel spreads are relatively higher to their historical average, hence we maintain our sell rating on the stock. Then Phillips Carbon Black, now known as PCBL, they reported results which were sales was in line, but profitability was a miss. Sales growth of 26% YOY was strong, but EBITDA was flat YOY. So margins have actually declined in
in maybe because of specialty volumes were lower than what we thought. So we have a call tomorrow, and then we'll get further details on it. Then there is a news on Mastech. So company has announced appointment of Pramila Kalive as COO. So she's joining from Mastech and brings 3 decades of experience. So this bodes well for Mastech. Lastly, on IT sector, so as per the economic survey, the IT BPM sector grew by 16% in FY22 compared to only 2% in FY21. And looking ahead, it is expected to grow by 10%. Despite the macro challenges that are persisting globally. So this is better than even pre-COVID levels where volume growth were only in single digits. So this is good for sector as a whole. And Infosys, HCL Tech, and TCS are expected to be key beneficiaries of this. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, Bhavesh. Good morning, everyone. Further news updates on Lemon Tree Hotel. The hotel chain operator has signed a license agreement for a 75 rooms property in Jabalpur, Madhya Pradesh, and hotel is expected to be operational by June 2024. Sterlite Technology Company has signed an agreement to sell its telecom product software business via business transfer agreement by way of slum sales as a going concern to Skyvera through its Indian subsidiary. The company will receive $15 million from sale of telecom product software business. Reliance Industry has stopped selling petroleum coke within India and boosted imports of the product to turn it into synthetic gas to power its refineries. Vodafone Idea has again approved preferential issue of debenture worth rupees 1,600 crore to ATC Telecom Infrastructure, and Vodafone Idea is ATC's largest customer in India. And lastly, Vedanta Group from Hindustan Zinc Limited on Tuesday said it has earmarked a $1 billion investment for converting its diesel run 900 odd mining vehicles into power battery operated ones over the next 5 years.